Affairs and Public Distribution, Shri Satish Chandra Dubey. धन्यवाद सर। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष तथा सूचीबद्ध खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधित अस्थायी समिति का 22वां और 23वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी का संस्करण की एक कॉपी प्रति सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट, श्री हरद्वार दुबे। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI के संसद सदस्यों के निर्वाचन की जांच के संबंध में लाभ के पदों संबंधी समिति के 9वें प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखा हूं। स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट बिजनेस, श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Chairman, sir, I rise to announce that government business for the week commencing Monday, the 12th December 2022 will consist of, number 1, further consideration and passing of the Energy Conservation Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha. Number 2, consideration and passing of the following bills as passed by Lok Sabha: the New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022 and the Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders Second Amendment Bill 2022. Number 3, the consideration and passing of the following bills after they are passed by Lok Sabha: the Multi-State Cooperative Society Amendment Bill 2022 and the Anti-Maritime Piracy Bill 2019. The fourth, the consideration and passing of the following bill after they are introduced. The Constitutional Scheduled Tribe Order Second Amendment Bill, the Constitutional Scheduled Tribe Order Third Amendment Bill, the Constitutional Scheduled Tribe Order Fourth Amendment Bill, the Constitutional Scheduled Tribe Order Fifth Amendment Bill 2022. Thank you. Honorable members, I have received 2 notices under Rule 267 for suspension of the rules. Sri K.C. Venugopal and Dr. Syed Nasir Hussain. I had the occasion to indicate to this Honorable House the parameters of seeking intervention by way of this rule. The notices are drawn are not found to be in consonance with the requirement of the rules. Matters of urgent public importance. Sir. My submission for special measures has been disallowed on legal terms. But sir, I would plead justice from you and the House. Our national spokesman has been arrested and taken away to Gujarat. And after that, whatever be the offence, that is something that is practiced by someone. Honorable member, may kindly take seat. Kindly take seat. Please take your seat. In this House, we dictate our actions in accordance with the procedure and rules. There is no issue which can't be raised according to rules. We must exemplify our conduct that can be emulated. I am here to assure you that expression of any nature will find vent. It cannot be in the ad hoc fashion. If an honorable member was to rise here suddenly, raise an issue, reach a conclusion that a view has been taken,
that will not be very fair to the office I hold. I am available to the members every day from 10 a.m. and thereafter during the House and up to late evening hours. I would always welcome any input from the honorable members, accommodate them. If in the ballot a matter of urgency has been left out for one reason or the other, I am open to it. I would therefore make one appeal. You are very senior people, very seasoned people. We are known as House of Elders. Let us follow rules scrupulously. I will have no difficulty of time to run the House even up to midnight. We have to reflect expression of the people, indicating their aspirations. I will take up special mentions. 0 hour, Shri Sushil Kumar Modi. सभापति महोदय, Shri Sushil Kumar Modi. सभापति महोदय 1989 में पाक समर्थित आतंकवादियों के कारण कश्मीर से लाखों कश्मीरी हिंदुओं को खास करके कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। 3 दशक से ज़्यादा हो गए वो देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं और उनको मैसेकर, मास रेप, जेनोसाइड के दौर से गुजरना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखकर जो डीलिमिटेशन कमीशन बना था जम्मू कश्मीर के लिए, जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में उन्होंने रेकमेंड किया है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व करने की उन्होंने अनुशंसा की है। इस 2 सीट में से 1 सीट महिला के लिए होगी और इन दोनों सीटों को केंद्र की सरकार नॉमिनेट करेगी और इन मेंबर्स को वही अधिकार होंगे जो पुडुचेरी असेंबली के अंदर जो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स को जो अधिकार हैं वही सारे अधिकार इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को होंगे। इसके पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 महिलाओं के लिए के नॉमिनेशन का प्रावधान था। साथ ही साथ जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसने ये भी रेकमेंड किया है कि जो पाक ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर का इलाका है जिसकी 24 सीटें फ्रोजन कर दी गई हैं, वहाँ के भी एक व्यक्ति जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं और जो जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं उस एक व्यक्ति को नॉमिनेट करने का उन्होंने अनुशंसा किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि जब डीलिमिटेशन कमीशन ने 2 कश्मीरी पंडितों और 1 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के डिस्प्लेस्ड पर्सन को नॉमिनेट करने का वो रेकमेंड किया है, तो जो जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 उसमें संशोधन कर और उस आरक्षण को लागू करने का प्रयास करें। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा सदन को कि सिक्किम के अंदर जो वहाँ पर मॉनेस्ट्रीज हैं, 51 मॉनेस्ट्रीज, उनके जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं उनके लिए 1 सीट वहाँ पर और आरक्षित की गई है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूँगा कि कश्मीरी पंडितों को जितनी बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी है, जितना उनको अत्याचार सहना पड़ा है, वैसी स्थिति में अगर डीलिमिटेशन कमीशन ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट रेकमेंड किया है और डिस्प्लेस पर्सन पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया उसके लिए, तो भारत सरकार एक्ट में संशोधन करके उसको लागू करने का प्रयास करे ताकि जब भी जम्मू कश्मीर की असेंबली बने वो लोग उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। श्री मोहम्मद नदीमल हक। Thank you. Honorable members, I have already indicated, and this may be noticed, all those who seek to associate can send their names to the table office. Shri Nadimal Haq. Thank you, sir. Sir, rightful heirs have a hard time claiming their inherited money, usually present in the form of unclaimed bank deposits, insurance, post office funds, etc., because the process to retrieve them
is often cumbersome and different for each entity and every bank. At present, the unclaimed sum is reportedly estimated at a massive 82,025 crores. The Parliament has authorized the RBI to enact a policy or issue directions with statutory backing. However, no redressal or actionable procedures have been formulated until now. What accelerates the problem is the fact that individual banks make their own rules and demands to release these claims. For instance, they ask for probate, sureties from unrelated person, indemnities, affidavits, mandatory fixed deposits, etc. Therefore, I request the government to formulate a standard operating procedure for making effective claims and for creating a more humane system for heirs of deceased persons to claim their inheritance. In addition, a centralized online database should be developed under the control of RBI that will provide information about the deceased account holder, including their details. Sir, further, in every 9 to 12 months, banks should be asked to mandatorily inform the RBI about the inoperative or dormant bank accounts. Sir, I end that the unclaimed public money, which is to the tune of more than 82,000 crores, in Honorable the end member, is the resource of the citizens. Honorable member, conclude. You can't read out in 0 I'm hours. just concluding. No, you are reading out. Okay. So what I'm saying, sir, yes. is Good. this amount is the resource of the citizens, and it is the duty of the government that this resource, unclaimed money, goes back in the fulfillment of the demands and the various schemes of the citizens. Thank you very much, sir. Shri GVL Narasimha Rao. Thank you, Chairman Sir, for the opportunity. My 0 hour submission is about developing the city of Vizag as a major IT destination in the country, sir, and the need for central and state government support in this regard. First of all, I would like to compliment Honorable Prime Minister, Honorable Minister for IT for giving a huge push to the impetus to the digital revolution in the country. So we made rapid strides. Sir, the United Andhra Pradesh developed largely on account of IT sector growth, and Visakhapatnam as a cosmopolitan city, as the city with the 9th highest GDP in the country, has the potential to emerge as a major IT destination, sir. Central government, our government has already sanctioned certain major IT institutions for the state of Andhra Pradesh and particularly Visakhapatnam, but somehow the implementation of this is lacking, sir. Expansion of the Software Technology Parks of India STPI campus in Visakhapatnam is getting delayed because of lack of land allotment by the state government and the state university, Andhra University. In the meanwhile, I request that 30,000 square feet of space be hired to set up the STPI center as quickly as possible, because this will offer incubation services and startups can make major leap of growth in this area. We have also sanctioned, sir, central government as center of excellence in RINL in Visakhapatnam steel plant, and I would urge the Ministry of Heavy Industries also to sanction a common engineering facilities center, CEFC, which will give a huge impetus to the activities of COE, which can emerge as a major smart manufacturing facility in the state of Andhra Pradesh. I would also request establishment of fabrication laboratory, Fab Lab in Visakhapatnam, and urge both the central and state governments to work in unity to ensure that all these institutions take shape as early as possible. Also, a center for development of advanced computing center, that is CDSA in Visakhapatnam. I urge the Honorable Minister in this regard, sir. I've already met our Honorable Minister Ashwini Vaishnavji, and I'm making this public appeal
to give a very special focus to Visakhapatnam and the state of Andhra Pradesh, because it can give a huge impetus to our software development and software exports. Finally, I also urge the Minister to extend the BPO, the promotion of business promotion BPO scheme for entities which have already availed this scheme, because this can create huge employment. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Shri Mohammad Abdullah. Sir, Indian Institute of Science, Education Research were announced in the year of 2006 and were further declared as Institute of National Importance in 2012 to promote them as a leading institute of country for science, education and research. As of date, IISERs have been established at only 7 locations in the country, which is not enough for the promotion of science, education and technology. But no such central institutions has been set up in Pudukkottai district of Tamil Nadu, which is one of the centrally located district of Tamil Nadu. Hence, it should be given an IISER institute to promote the region. The union government also has enough land available to set up the same, and the establishment of IISER in the Pudukkottai will augment the existing NIT in Tiruchirappalli, which has been saturated over the years. Sir, IISER Pudukkottai and NIT Trichy's close coordination can rapidly advance the research and development in the science sector for the benefit and development of the country, sir. So hence, I call upon the union government to open an IISER in Pudukkottai at the earliest, sir. And also, sir, we are the very first princely state which joined with India, sir. But till now, we don't get even a small benefit from the union government, sir. You should take care of us. After 75 years, I am requesting. Thank you, sir. Shri Jayant Chaudhary. महोदय, बहुत भारी मन से और मजबूरी में इस विषय को यहाँ सदन में रख रहा हूँ। मैं जिक्र कर रहा हूँ 3 अक्टूबर 2021 का, जहाँ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तिकनिया में आंदोलनकारियों पे पीछे से एक गाड़ी आती है और उन्हें रौंद के चली जाती है। ये ऐसी घटना है जिसे लखीमपुर नरसंहार से के नाम से पूरे देश में जिसकी चर्चा बनी, और देश के किसानों को इस घटना ने झकझोर करके रख दिया। गौर करने की बात यह है कि 1 दिसंबर 2022 अभी जो शीतकालीन सत्र विधानसभा में चला है, हमारे ही दल के विधानमंडल नेता विधायक श्री राजपाल बालियान जी ने, स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने मांग रखी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा, ये आतंकित प्रश्न की कॉपी में आपको उपलब्ध करा दूं। Honorable members, can I make an appeal? And can I be assured that if I make something reasonable, indicate something which is in your heart, why should we jump? And why should there be interruption? So let it be both sides. If an honorable member is making something by way of a statement on the floor of this house, and it is objectionable, exceptional, should not be upright, there is a way to deal with it. I am here to take care of it. But to raise it in a chorus, this side and that side, I would expect the honorable members to conserve their energy, which is needed elsewhere, and display it as much as you can. Jayant. धन्यवाद सभापति जी। कोई भी बात असंसदीय में नहीं करूंगा तो आपका अधिकार बनता है। अतारांकित प्रश्न मुख्यमंत्री जी से पूछा गया, और ये पूछा गया कि क्या जो घायल किसान हैं उनको सरकार की तरफ से कोई सरकारी मुआवजा मिला है, क्या जो मृतक किसान थे इस घटना में उनके परिजनों को कोई सरकारी नौकरी दी गई। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि खुद सरकार ने यह वादा इस घटनाक्रम के बाद वहां किसानों के बीच पहुंचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर यह वादा किया था
कि 10 लाख रुपए का मुआवजा हर एक घायल को दिया जाएगा। जो 4 मृतक किसान थे उनके परिवारजनों में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। 1 साल बीत चुका है लेकिन अब तक सरकारी कार्रवाई इस पर कुछ हुई नहीं है। मुख्यमंत्री जी का खुद इस पे जवाब आया कि ऐसी कार्रवाई प्रदेश सरकार अब तक नहीं ले पाई है। तो मैं मांग करना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, यहाँ सदन के नेता अभी मौजूद थे, इन्हें सवाल पूछना चाहिए क्योंकि बहुमत की सरकार आप ही की प्रदेश में है, उनसे जवाब मांगिए अब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। क्योंकि ये बात हमारी आपकी नहीं है, ये बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, ये बात हमारी आपकी नहीं है। सरकार पे जनता विश्वास क्यों करे अगर आप सरकार वादे पूरे नहीं करेगी। धन्यवाद। श्री राघव चड्ढा। श्री राघव चड्ढा। सर, श्री गुरु नानक देव जी का परम पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहब। सर, श्री गुरु नानक देव जी का परम पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहब का लांघा जब आज से कुछ साल पहले खोला गया तो सिर्फ हम पंजाबी ही नहीं सर, बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया बाबा नानक के रंग में रंग गई। हर नौजवान इस देश का, हर बच्चा, हर बुजुर्ग बाबा नानक के गुरु घर में जाकर, श्री करतारपुर साहब में जाकर दर्शन करना चाहता है, मत्था टेकना चाहता है, और कोई भी इससे वंचित नहीं रहना चाहिए सर। बल्कि हम लोग तो एक बार नहीं, बार बार जाकर वहां जाकर मत्था टेकना चाहते हैं। लेकिन 3 समस्याएं आज हर श्रद्धालु के, हर संगत के हर सदस्य को झेलनी पड़ती हैं जब वो गुरु घर जाता है, श्री करतारपुर साहब जाता है मत्था टेकने। पहली समस्या है सर पासपोर्ट की। आपको पासपोर्ट होना आपके पास अनिवार्य है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप वो लांघा पार करके श्री करतारपुर साहब नहीं जा सकते, आपको इजाजत नहीं दी जाती है। मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करे, ये मुद्दा उठाए, जब लांघा खोला ही है, जब संगत के लिए एक फैसिलिटी तैयार करी है कि वो गुरु घर में जाकर मत्था टेक सकें, दर्शन कर सकें, तो इस पासपोर्ट की जो कंडीशन है इसे वेव किया जाए। आधार कार्ड जैसे किसी भी आइडेंटिटी कार्ड को इसे वैलिड आईडी कार्ड बनाकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या यह है सर कि आज हर श्रद्धालु को $20 की फीस देनी पड़ती है। आज डॉलर वैसे ही आप जानते हैं कि 80 के पार हो चुका है। हमारी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते 80 के पार डॉलर हो गया है। अगर एक शख्स को $20 की फीस देकर दर्शन करने जाना पड़े तो 1600 रुपए से अधिक उसकी जेब से लगता है। अब मान लीजिए सर कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, वो हर साल जाना चाहते हैं, तो साल का एक परिवार का 8000 रुपए का खर्चा होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये $20 की जो फीस है इसे वेव किया जाए और संगत के हर सदस्य को वहां जाने की अनुमति दी जाए। और आखिरी समस्या है सर, जो रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है, कम्बरसम है, उसे सरल किया जाए ताकि संगत और गुरु घर के बीच में जितनी दूरियां हैं वो मिटाई जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं एक लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में रखना चाहता हूं। महोदय, पिछले दिनों देखा गया है कि देश में आगजनी की घटनाएं बड़ी संख्या में बढ़ी हैं। आज चाहे एक समय था जब हम लोगों का बचपन था, गांव में जहां फूस के छप्पर हुआ करते थे, फूस के घर होते थे, आग लग जाया करती थी। खेतों खलिहानों में आग लग जाती थी, क्यों खलिहान कई महीने तक चलते थे। लेकिन अब वहां मकान पक्के हो गए, वहां पर खलिहानों में की जरूरत नहीं होती, कंपाइन मशीन आ गई, तो तत्काल किसान अपनी फसल लेकर के घर आ जाता है। लेकिन शहरों में आज जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, उनमें आग लग रही है। मान्यवर, अभी पिछले दिनों लखनऊ में एक लवाना होटल है, उस होटल में आग लगी। जो वहां गेस्ट टिके हुए थे उनको निकलने तक का रास्ता नहीं था, कहीं जाने चली गई। सड़क पर चलती हुई गाड़ियों में आग लग रही। मान्यवर, ये शॉर्ट सर्किट एक ऐसी समस्या बन गई है कि आज कोई भी बिल्डिंग उसमें सुरक्षित नहीं है।
बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी गोदामों में, कारखानों में आए दिन आग की घटनाएं सुनने को मिलती हैं और उसमें अरबों रुपए की हमारी संपत्ति की क्षति होती है और बहुत बहुमूल्य जाने जा रही हैं। तो मान्यवर, मैं चाहूंगा इस विषय पर सरकार चिंता करे कि कैसे आज ये बढ़ती हुई जो आगजनी की घटनाएं हैं इन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है और इसके लिए सरकार संज्ञान लेने का काम करे। ये मैं आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान। Thank you very much, Chairman, sir. Sir, the national policy for rare diseases was finalized and notified by the Ministry for Health and Family Welfare on 30th of March 2021. Sir, subsequently, the ministry increased the funding support of rupees 50 lakh per patient for all categories of rare disease patients in May this year. I must thank the ministry for having honored the request of a group of parliament members who have been requesting this time and again. But sir, even after several months of announcement, not a single patient diagnosed with life-threatening rare genetic disorders has so far been put on life-saving treatment. This unending delay and lack of urgency on the part of the centers of excellence, sir, has not only claimed several innocent young lives, but also endangered the survival prospects of close to 415 odd patients, largely children, diagnosed with life-threatening rare disease conditions, including lysosomal storage disorders, Gaucher disease, Pompe disease, MPS 1 and 2, Fabry disease. An analysis of the crowdfunding platform and initiative of the ministry reveals that close to 190 odd patients diagnosed with ultra-rare genetic conditions, including LDS, could be immediately put on life-saving therapy, thereby reducing the risk of loss of life, sir, and the ongoing anxiety that subsequently comes in. Patients without any institutional support are otherwise left with no option but to wait for the inevitable without any institutional support, sir. A majority of these patients have been diagnosed with Gaucher disease, for which the Drugs Controller General of India approved therapy is available for many years. Several centers of excellence, sir, including the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Maulana Azad Medical College, New Delhi, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics, with Nizam's Institute of Medical Sciences, etc., are yet to seek financial support for patients diagnosed with life-threatening diseases, sir. Sir, group 3 conditions, at least for those conditions which approved therapies available under 50 lakhs, are currently available in India. So just 1 minute. This is despite several reminders from the ministry. I would like to ask the ministry to consider 2-3 points. One is that the Ministry of Health and Family Welfare should issue urgent instructions to the centers of excellence to treat 190 odd. Srimati Vandana Chavan. Thank you, sir. Sorry that I am late. So several cities in our country have witnessed a dire brunt of the impacts of climate change since the last few years. So on the one side, they are hit by unprecedented floods due to changed rainfall patterns in the form of heavy and torrential rains or cloudbursts or even storms in some of the cities which have never seen it before. So all this results in loss of property, loss of life, and of course, needless to say, stripping the poor of their every belonging. Sir, on the other side, our cities have also experienced heat waves. Increased temperatures or severe heat waves cause serious impacts on health, productivity at work, and even deaths, sir. Every such event hit the headlines, and then as soon as the water and the heat is down, it is forgotten and life carries on till the next event happens.
So I come from the city of Pune. We have experienced severe floods in various parts for the last 4 years, killing and displacing people, sir, and destroying property worth crores. In a carbon inventory report, our city, prepared by Terry, shows that Pune will have 32% increase in rain by 2030, which is unaccounted for in the developmental process, sir. As far as heat waves are concerned, the World Bank in a very recent report has said severe heat waves responsible for thousands of deaths across India over the last few decades are increasing with alarming rate, and soon the country could become the first place in the world to experience heat waves that break the human survivability limit. This is extremely serious, sir. Rampant urbanization and not giving attention to capacity building of the administrative agencies, haphazard and unscientific development, mushrooming of illegal constructions, disregard to natural features, rampant deforestation, cementing and capping of roads and lands are becoming the main recipe for flooding and heating. Some of the policies of the government, sir, with one-size-fits-all approach, example, applying TOD, the transit-oriented development, which has come in recently, an increase in FSI 4 times just to make a metro financially feasible, with absolutely no regard as to the carrying capacity of that particular city. And what is the kind of water and infrastructure which goes along with it, which is required. This will make our cities grossly unhealthy and non-livable. So we have to stop this as of now, and the time is now, sir. Sir, you have made a wonderful beginning in the last 3 years, the last 3 days. We have been deliberating on exceptionally important bills which address sustainability, thereby making the commitment of this House, every parliamentarian, to our planet and to our future generations. So I appeal to the Honorable members, I go back 3 decades when I was a member of parliament in the 9th Lok Sabha. We used to have heroes of 0 hour because they used to be extempore and they used to be very brief. Now it is structured. Let us confine to that. Shri Satish Chandra Dubey. 30 seconds. आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बात रखने का every member, my senior colleague, would stand in affirmation, sir. Good. Sir, and this is against Shri Satish Chandra Dubey. आदरणीय सभापति महोदय, आपने शून्यकाल में मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, बिहार राज्य में पिछले कुछ महीनों से हो रहे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अत्याचार जैसे गंभीर मामलों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। समूचे बिहार की जनता डरी और सहमी हुई है। न जाने कब किसकी हत्या हो जाए, किसके साथ लूटपाट हो जाए, किस बच्चे का अपहरण हो जाए, किसी ने कुछ पता भी नहीं है। भय का माहौल बना है, व्याप्त हो रहा है। रात्रि 8 बजे से हो या दिन हो, किसी को घर से निकलना सुरक्षित नहीं है। 1990 से लेकर 2005 तक शासनकाल में जो हुआ करता था, आज कमोबेश वही हो रहा है। 2 दिसंबर 2022 को गृह जिला पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज अपराधियों द्वारा नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले दिन Honorable members, I can appreciate. Honorable members, honorable members, kindly take your seat. Kindly take your seat. Take your seat. Kindly resume your seat. Kindly take your seat. Honorable members, can I appeal to you? It will never be nice for me to every time make an appeal. Can you imagine my pain? I am getting input from everyone all over the country. What happens here?
You will get from select category, I will get from everyone. As an exceptional situation, I gave the honorable member 30 seconds. I hope he would make his input. We are not to ignite things. We have to douse fire everywhere. If we become the epicenter of it, where it will lead us? I have indicated you shall never have agreements to put across your point. There are rules available, mechanisms available. There is no member in the House, I say without fear of contradiction, who has reached out to me and has not had his say on that day. I invariably accommodate him or her. If I find a member is not here, I skip that name, look at when she or he is here, and give the platform. Please follow decorum. I will be very patient. I will be very persuasive. I will never take a judgmental view. But I have your strength. Once I take a judgmental view, friends, pardon me, I do it on your strength. I will not reverse it. It will be a tough call for me. I am sure you will help me act as a rational mind. I will respect your sentiments. We have two very distinguished people in the House by way of their designation, leader of the House, leader of the opposition. We have the former Prime Minister. I have declared on the floor of this House that these three honorable gentlemen, one of them is not here, Dr. Manmohan Singh, if they rise, I will not look at the rule book. I said so in your presence. And all of you have access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side or from them. But if you start making it the way you are doing it, you are entitled. Do it in my chamber. I come at 10 o'clock every day. I am available here during lunch. Do I take it now that we will exemplify our conduct to a level that everyone will say, yes, upper house is a role model of decorum, discipline. It is a theater for dialogue, debate, deliberation, and discussion. Thank you. Come on. पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज के अपराधियों के द्वारा नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले दिन एक होटल संचालक बेतिया के सूरज बैठा की हत्या जिले में हो गई। 7 दिसंबर को दिन दहाड़े एसबीआई बैंक को लूट हो गई। भागलपुर में सरेआम महिलाओं को टांगी के से काट के कुल्हाड़ी से काट के मार दिया गया। आज जंगल राज पार्ट 2 पे बिहार चल पड़ा है। अतः आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैं सत्याग्रह की धरती चंपारण से आता हूं और उस पवित्र धरती को बिहार की महागठबंधन की सरकार आज जो कलंकित करने की काम कर रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। बिहार की सरकार हमारी बातें सुनेगी नहीं और इस सदन में बात रखेंगे नहीं, आखिर कहां रखेंगे? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पे पहल करके इस समस्या का निदान किया जाए। धन्यवाद। Honorable members, one second, would you take your seat? Honorable members, I think all that I said has not been appreciated. If someone engages into an act of indiscretion or something that is not expected, that can happen. I'm here to look. I'm here to visit that person with exemplary consequences. I have gone to the extent of saying
that I can be judgmental. You don't allow me. If the honorable member has said something, I will examine it completely. But if you are on your feet physically and do it, that is never done. Please. Jairam ji, you know it more than I do. Even when things come on record, there are consequences that emanate. Things can't be examined in the heat or passion. If a point is raised, if anyone has a grievance with respect to anyone making a reflection here, take recourse to rules. And even if you do not take recourse to rules, on my own I examine. I had the occasion to indicate day before, two of the honorable members came with identical special mentions. I am looking into it. My office is doing more work for it so that we bring about synergical approach. Dr. V. Siddhasivam. Shivdasan. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And I know, I don't believe in Shakespeare who says there is nothing in name. Everything is in name. Shivdasan. Yes. The pronunciation is the matter, sir. Go ahead. He is Dasan of Shiva. Respected Chair of this August House, I am coming from Kannur, from Kerala state, where the largest number of libraries are functioning in India. The public libraries are the strongest public spaces in the world. Public libraries should be developed as a community center for the knowledge production, skill development, entertainment, and physical education. But in our nation, the number of libraries is very less, and the condition of existing libraries are not at all good. Respected sir, in various parts of the country, the local self-governments are giving some assistance to the public libraries. In rural India, the libraries are working because of this assistance of the local self-governments. But the union government, they are not giving any financial assistance to the states, governments, or the local self-government for the public libraries and public cultural institutions in rural area. Earlier, local self-governments have had some income through the collection of tax, like entertainment tax. Even though it was a meager amount, it is taken by the union government through GST. Sir, then how the libraries will function or how the libraries will survive? Respected Chair, look at the salary of the librarians in the public libraries in our country. Sir, they are getting very meager amount as in the name of honorarium. It is given by the state government. The union government is ready to allocate the proper amount for the salary of the librarians in the public libraries in rural India. Respected Chair, the amount of the salary of the librarians in local areas, public libraries, should be increased. Sir, the union government should provide sufficient amount of fund to the states for resources to the libraries. The basic facility should be ensured for the librarians. Some libraries in Kerala are functioning exceptionally well through the initiative of the common people, sir. But in many other parts of India, the situation is very different. So librarians can play a major role. The libraries can play a major role, emancipate the Indian people from illiteracy. Shri Neeraj Dangi. नो यूज यार। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे ये महत्वपूर्ण मामला सदन में साझा करने की अनुमति प्रदान की है। और मैं समझता हूं कि ये मामला सदन के हर सदस्य का है और निश्चित रूप से हर सदस्य इस पीड़ा से वाकिफ भी है। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री आदर्श
ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव जो है गोद लेकर के उसे मॉडल गांव की तरह विकसित किए जाने के लिए उसे गोद लेना था। लेकिन इस योजना में ग्राम पंचायत को विकसित करने के लिए अलग से किसी प्रकार के बजट का कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है कॉमन रिव्यू मिशन CRM के तहत इस योजना का एक अध्ययन कराया गया और इस अध्ययन के तहत ये पाया गया था कि जो वर्तमान प्रारूप है इस योजना का वो सक्षम नहीं है कि इस योजना के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, और जो धन की कमी है उसके चलते ग्रामीण अवसंरचना जो है उस ग्राम को विकसित करने के लिए वो महत्वपूर्ण प्रभाव इस विकास के लिए नहीं डाल पा रही है। इस अध्ययन टीम में सेवानिवृत्त नौकरशाह, शिक्षाविद और विभिन्न अनुसंधान संगठनों के सदस्य शामिल हैं। ऐसी परिस्थितियों में योजना के मौजूदा प्रारूप को जो है किस प्रकार से देखा जाए, उसमें उन खामियों को किस तरह से पूरा किया जाए और पिछड़े इलाकों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराया जाए, ये जो है बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। जब तक इस प्रारूप को बदला नहीं जाता है, सांसदों के लिए गोद लेना, मैं समझता हूं कि किसी गांव को गोद लेना संभव नहीं हो पा रहा है। सांसदों के MP फंड से संपूर्ण संसदीय क्षेत्र के साथ साथ एक गांव को मॉडल गांव में विकसित करना जो है इस योजना से संभव नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ एक परिकल्पना मात्र रह गया है। यही कारण है कि देश की 2,55,000 ग्राम पंचायतों में से अब तक 5 चरणों के तहत सांसदों द्वारा केवल अब तक 1855 ग्राम पंचायतों का ही चयन हो पाया है। यदि भारत सरकार सही मायने में बेहतरीन तरीके से ग्राम पंचायतों को विकसित करना चाहती है तो सबसे पहले एक आदर्श गांव जो है उसका एक मॉडल तैयार किया जाए और उसके तहत ही उस ग्राम में लगने वाले बजट का अलग से प्रावधान करें, ताकि प्रत्येक सांसद प्रति वर्ष एक ग्राम को गोद लेकर के उसे भली भांति विकसित कर सके। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे गंभीरता से ले और इसके लिए अलग से एक बजट का प्रावधान करें। डॉक्टर अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir. So I'll be very brief. Sir, yesterday the issue of cyber attack at the All India Institute of Medical Sciences at Delhi was raised. So my thought on this is that it should not be treated as an isolated incident of a cyber attack. So currently the figure states that 77% of Indian companies were hit by cyber threats during the festive season of 2021. That was the McAfee Enterprise and FireEye report. The National Cybercrime Reporting Portal saw a rise of 15.3% in reported complaints during the second quarter of 2022 compared to the first quarter. That's about 2,37,658 complaints. So it's a rising, issue of concern, and it is all the more important because we have been entering into various PPP models, not only in the hospitality, not only in the medical sector, but in railways, airways, and various public facilities and public utilities. So the point here is we have to look at this issue from 3 points. One, whether the current existing IT securities are adequate. Number two, whether they can be recovered. Actually, we should not stop at this. We have to also think about business continuity planning. How quickly, how fast the normal operation can be restored. It is not adequate just to recover the IT system. In the AIMS case, this is what is happening. There are long queues at OPD, at the billing counters, and the doctors also do not know what to do. So the most important thing here, therefore, is we publicly declare our business continuity plans in the event of attacks on our servers, along with mechanisms that establishes a timeline for resuming the normal operations. This is what happens in the United States. This is what happens in the UK. And I think we should take the advantage of the G20 to raise this issue for international collaboration on this particular aspect. So I re-emphasize that what is more important is to how quickly we recover the critical operations of the hospital. And that should be publicly declared.
and then for a full-scale operation, whatever is the time taken. And this is not just for government to do, so this is for all private sector to do. So currently, we have the National Cyber Security Strategy 2020, which is really appreciable because government has brought it out. But the structure has not really come up. I would appeal, since the Honorable Minister is here, to make this structure very robust, and then it would actually become very useful for the economic activity in this country. Thank you so much. Shri V. Vijay Reddy. Thank you, Chairman, sir. Sir, this year marks 75 years of India's independence, sir. While these 75 years of India's independence signify the immense progress in the country, the reality remains that independent India has failed to ensure a meaningful upliftment of backward classes in the country. Even today, the long-standing aspirations of the backward classes to have equitable opportunities in all spheres of life remains unfulfilled. Sir, every citizen of this country is grateful to Baba Saheb Ambedkar for granting reservations in proportion of their population, and it is the scheduled caste and scheduled tribes who are all very happy today because of the reservations. They are treated on par with the other communities in this country, and the upliftment could be possible. But unfortunately, the backward classes in the country have been unjustifiably left out from the fold of the caste enumeration and proportionate reservation. They have also been denied reservations in the central, state legislatures as well as higher judiciary, sir. Sir, even though the backward classes constitute more than 50% of the Indian population, the reservation is still capped at approximately about 27% or so. Sir, just last month, the Supreme Court has held that the total reservations, the ceiling of total reservation of 50% is flexible, and the breaching of the ceiling would not violate the basic structure of the Constitution. Therefore, there is no legal hurdle as far as reservations to the backward classes in proportion if their population is concerned for the government to provide reservations to the backward class in proportion of their population, sir. Sir, the decades of gross injustice suffered by the backward classes cannot be undone, but however, remedial measures can be undertaken, but we can ensure a holistic upliftment of thorough proportional reservation. Sir, this is my sincere request to the government to take up the reservations for the backward classes in educational institutions, public employment, legislature, as well as higher judiciary. Thank you very much, sir. Shri H.D. Devgoda. Shri H.D. Sir. H.D. Devgoda. May I kindly sit and talk, sir? Yes, yes, please. Sir, regarding the drinking water in Karnataka is a major problem. I don't want to hurt the feelings of anybody in this house, but how Karnataka has been suffered for the drinking water, and we are fighting this battle. The things went on day to day. The water level is going down, and we have approached the union government, and we have also approached the Karnataka, the subsequent rulers. Sir, Mekedatu is one of the prime issue to construct the dam in our own area, not to encroach any area of the other states. Sir, we are the affected party. If anybody wants to speak, they can also speak. I can answer all those points
whichever other friends are going to speak. I will sit in this house and I know what is going on. Sir, one small area, Meghalaya, which is not encroach any other state's land, and in our own state, we want to construct a small dam, and they are objecting. Sir, Karnataka is a deficient state, whether it is, there are so many issues pending in Government of India, which we have demanded from Karnataka, whether it is Tungabhadra or Mahadayi or Karnataka, Old Mysore. Sir, today we are begging for the drinking water in 9 districts of Old Mysore. Sir, let anybody question this, so I can make a request to our good self to see that the problem of Karnataka must be solved. That is my only request. I have come here to only see that the problem of Karnataka, whether it is Mahadayi or whether it is the... Now 0 hour is over. Question hour, question number 31. Question number 31. No, we'll accommodate. Honorable Minister. Shri Sasmit Patra. Sir, for this opportunity. Firstly, sir, I'd like to thank the Honourable Minister for the efforts made in terms of reducing the trade deficit between India and China in terms of the trade that's really happening. And as compared to 2013-14, as the Honourable Minister has mentioned, the trade deficit has come down in terms of the percentages, though absolute terms, it's still high. I would like to know from the Honourable Minister, sir, through you, what are the steps that the government is taking to reduce the trade deficit between India and China, and how the PLI measures and the schemes would really help in terms of reducing this trade deficit, and what is the expected forecasted trade deficit in the next few years? Thank you. Honourable Minister. Honourable Chairman, sir, I think it's a very, very important question, but my esteemed colleague is possibly busy in other activities, so we don't have the privilege of having him here to ask me supplementary questions, but I'm grateful that Sasmitji has highlighted this issue. I'd just like to take a minute, sir, to give a little perspective. India-China trade, if one goes back 22 years, around 2000-2001, was barely $2 billion. Only $2 billion in 2000-2001, and that position continued until 2002-03, where it increased at best to about $5 billion. At that time, the trade deficit consistently was under just about $1 billion. So if I look at 2000-2001, $661 million. 1-2, $1 billion. 2-3 again reduced to $800 million. 3-4, $1 billion. And this was the general trend in Indo-China trade. I don't know what happened after that. It's a matter for debate and research. But suddenly, after 2003-04, the $1 billion trade deficit over the next 10 years increased to $36 billion. And the entire country, in a way, became a large marketplace, inviting substandard, opaquely priced, non-transparent, valued goods into the country in a big measure, because of which our imports increased from $4 billion in 3-4 to
51 billion in 13-14. And in a manner of speaking, we opened ourselves to a large number of dependencies on China, which we have suffered for the years as the economy grew, as the country prospered. We became so dependent on them that products which at one point were India's strength, for example, Honorable Chairman Sir, active pharmaceutical products, APIs, active pharmaceutical ingredients, which India had tremendous strengths on, we used to export to the world. We had plants in India which manufactured high quality APIs. Sadly, we gave up that entire industry to China and landed up in a situation that when I was discussing the RCEP, at the RCEP negotiations, and I was attacking the Chinese side, that why are you allowing such substandard goods and why are you allowing low price? We don't even have many times any idea how you can make goods at lower than the raw material costs in India. He says, but sir, your industry is dependent on us. If I don't give you these 2 billion, 3 billion of APIs, your $10 billion pharma industry will collapse. And I actually realized that we have over 10, 12 years lost India's competitive strength in very critical areas. And therefore, sir, this government focused on the Make in India initiative. While of course with economic growth and prosperity, the demand for goods is increasing. And we do not have sufficient capacity as yet in India to meet this large demand for goods and services. A lot of capital good industry got killed in that 10-year period. And because of which today for a lot of capital goods, electronics goods, where we never promoted our industry, they all became dependent on Chinese imports. It is only the Modi government which recognized, the Modi government, sir, it's a very important subject. My honorable friend Jairamji appreciates the gravity of this subject, and I hope you are not holding a brief for somebody who's dumping goods into India. It's important that the country recognizes and realizes how we have become dependent on a country which has inimical interests, and how this government has, through a number of initiatives today, focused its attention on promoting Make in India. Sir, we have introduced production-linked incentive schemes, where between semiconductors, where we are giving 76,000 crores, and 24 other sectors, where we will be giving as Government of India 1.97 lakh crores as support to Indian industry. For the first time, such large measure of support at the central government level to promote domestic manufacturing, make our manufacturing competitive, and start reducing imports from China. And I'll just give one example, sir. Mobile phones. India used to import almost 100% of mobile phones, sir. We had only 2 plants doing mobile phones in this country. Thanks to the PLI scheme, today we have over 200 companies in the mobile phone ecosystem. And we are now not only producing for India, but we are a large exporter of mobile phones. Shri Premchand Gupta. श्रीमान जी, ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना इज नॉट द सॉल्यूशन. हमारा जो ट्रेड बैलेंस था सर चाइना के साथ 2004-05 में तकरीबन $1.5 बिलियन था, जो अब बढ़कर $115 बिलियन है, $115 बिलियन total trade, and the trade deficit is $73 billion, highest for since last 20 years. In any case, I am not blaming sir. Sir, at one point of time, China के लिए पूरी दुनिया से लोग बड़ी MNCs China जाते थे, plant लगाते थे, and China thus became manufacturing hub for the world. We are also dependent on Chinese products. So, sir, what we are doing, PLI scheme you have introduced, and in some cases it is successful also. But, sir, there are companies, because of COVID restrictions and other problems, political issues in China, many multinational companies,
जो एम्प्लॉय करते हैं, एक फैक्ट्री 2 लाख लोगों को, 2 lakh people are employed by one factory in China. सप्लीमेंट्री। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सरकार इस बारे में कुछ ऐसा स्कीम बनाए कि ये कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग हब वहां से उठाना चाहती है, वहां से उठाकर हमारे यहाँ ले आए। ऑनरेबल मिनिस्टर, अभी वो वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया वहां जा रहे हैं, तो व्हाई कांट वी ब्रिंग देम हियर? ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल चेयरमैन सर, वैसे तो नजरअंदाज नहीं कर सकते इस वास्तविकता को, जो आपने सही कहा, 1.5 बिलियन का डेफिसिट अगर हमें विरासत में 2014-15 में 48 बिलियन का डेफिसिट मिलता है, तो वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप ब्लेम गेम की बात नहीं कर रहा हूं, एक देश की क्षमता को ही खत्म कर दोगे तो क्षमता को खड़ा करने में समय लगता है। ऑनरेबल मेंबर, मुझे लगता है वो चोट जरा गहरी पहुंची है, उस समय आप भी सरकार में ही थे, पर अलग बात है ये। जहां तक कंपनियां जो चाइना से रिलोकेट करना चाह रही हैं, ये एक प्रोसेस होता है, ओवरनाइट कोई रिलोकेट नहीं करता है, ओवरनाइट कोई कंपनियां बंद नहीं करता है। अमेरिका ने भी कोई वहां से खरीदना ही बंद नहीं किया। हम एक एक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निजी क्षेत्र के साथ चर्चा करके हमने एक स्केल कमेटी बनाई, स्टीयरिंग कमेटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ लोकलाइजेशन एंड प्रोमोटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स स्केल। ये पूरी निजी क्षेत्र के लोगों के साथ सलाह मशुरा करके आइडेंटिफाई किया गया क्या क्या कॉस्ट डिसएडवांटेज के एक एक बिंदु है और कितना सपोर्ट देने से भारत का उद्योग खड़ा हो सकता है। उस हिसाब से करते हुए ये पीएलआई स्कीम्स डिजाइन किए, कोई विंस एंड फैंसीज से नहीं बनाई। सिमिलरली, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के माध्यम से लोगों के लिए आउटरीच करना, देखना कौन अनाउंस कर रहा है नए प्लान्स। मेरे कलीग अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत बढ़िया सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने की पॉलिसी, पहली बार इस देश में हुआ होगा कि 76,000 करोड़ सिर्फ एक सेक्टर के, क्योंकि हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत को बल दें। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तरह तरह के हमने स्टेप्स हैं। आप चाहो तो मैं तो 1 घंटे का उद्बोधन दे सकता हूं, पूरा क्वेश्चन आवर खत्म हो जाए। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉस, हर छोटे बड़े काम पे व्यापारी को, उद्योग को जेल में डालना या जेल में परेशान करना ना पड़े, उसको एक हिम्मत हो, हिम्मत मिले कि हम व्यापार कर सके। बैंकों को मजबूत बनाना, किस हालत में हमें बैंक्स मिले थे 2014 में, सबके सब एवरग्रीनिंग और एनपीएस के बोझ में दबे हुए थे। एक एक चीज को ठीक करते करते आज ये स्थिति बनी है कि देश भी मजबूत हुआ है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स देश ने तैयार किए हैं। इसमें हम सबका रोल रहा है। मैं समझता हूं सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश को एक मजबूत ताकत बनाया, विश्व शक्ति बनाई। Before I call upon John Britas, I would like to say it is age-old wisdom. Brevity is the soul of it. And it applies to everyone, including me. And I would urge everyone, the more homework we do, the brief we will be. And I'm sure, one second. The Honorable Minister has been very focused, so don't take it that way. The points are well taken from all sides. I would now call upon John Britas. Thank you, sir. Sir, you came to brevity only when it came to me. Sir, the Honorable Minister is very erudite, ebullient, and a bit smart and clever too. Sir, in his answer, sir, in order to blame the UPA, he talked about the percentage of increase. That's from, say, 2,346% increase has happened. He is from the financial sector. Conveniently, he picked up the percentage here, and he forgot the quantum. Sir, Prem Gupta ji talked about 73 billion US dollars trade deficit. Sir, that's not the true picture. This year, the trade deficit is going to be all-time high. It's going to touch 100 billion.
despite the so-called Atma Nirbhar and this incentive scheme. Sir, my question, specific question to you. This trade deficit cannot be dealt in isolation. It's part of the ecosystem. The GDP results have come for the first half year, and it says that there is a dip in the manufacturing sector. It means that we are on the wrong path. And there is a parliamentary standing committee report in front of him which talks about the so-called deficiencies which Sir, my question. Sir, it has to respond. Sir, yes, sir, privately. So the parliamentary standing committee talked about the deficiencies, administrative and regulatory hurdles, inadequate and costly credit facility. What is that he is going to do to improve the ecosystem and also to act on the specific suggestions of the standing committee? Honorable Minister. In a way, the honorable member has confirmed exactly what I said. The fact that India became so helpless and our manufacturing sector became so weak that having inherited a 48.4 billion trade deficit in the first year itself, we have in fact been able to really rein in the deficit and not allow the runaway increase that was allowed by the earlier government. Having said that, sir, the fact that the current year trade deficit is going to be high is a sign of growing economic activity also. The fact that our imports from China largely emanate from intermediate products on which we process and add value for further re-export or consumption in the country. The fact that we are importing a lot of machinery shows that the country now has started investing and gross capital formation in the country is increasing. The fact that we are increasingly consuming more goods will give confidence to new investors to invest in manufacturing, which Prem Gupta ji just mentioned, so that there's more manufacturing domestically. So this is a cycle. Investors keep watching what is the demand, what is the consumption pattern. And when they see demand, when they see consumption, they import capital goods, because unfortunately we've killed capital good industry in that 10-year period. We are now encouraging even manufacture of machinery. We are seeing a revival of domestic indigenous startups coming up with very, very good, bright ideas to promote Make in India. On the other thing about cost competitiveness, sir, the government has made a lot of effort on ease of doing business, decriminalizing laws, reducing the logistics costs. PM Gati Shakti is a unique initiative unparalleled in the world, by which we can do smarter and timely implementation of infrastructure projects and bring down logistics costs. Question number 32, Sri Abir Ranjan Biswas. Sir, question number 32. Honorable Minister. जी जवाब दे रहा हूँ टेबल पर बोला Supplementary one. Sir, as the reply given by the minister, it seems that for the nutrition of children, especially we know that milk is the chief source, he seems to be heavily dependent on the Pushan scheme, as per the reply. Sir, I would like to bring to the notice of the minister that this scheme has not been a very good success. Having a target of arresting stunted growth to 25% by 2022, the current NFHS 5 figures show that it has only achieved 35.5%. That's just an example, sir. So what my question is, does the Honorable Minister, since I'm again repeating, milk is the chief source of nutrition for under aged children, does the Minister, it has said that he does not regulate, the government does not regulate the milk prices. Does the Minister intend to do something more to help out in these cases the people of the lower income group? Yes, the children of the lower income group. Honorable Minister. Milk prices traditionally in the country have been deregulated, are determined by demand and supply, and also we must bear in mind that half the country's population is associated with the agriculture sector, and income from dairy, income from the milk produced by them
is a very important supplementary income that helps the farmers of this country, that helps our annadatas to provide a better future for their children. Having said that, sir, the government is very conscious of its responsibility towards the nutrition of the children, and therefore we are implementing the Poshan Abhiyan under the Ministry of Child and Women Welfare, which provides support for children under 6 years of age. Supplementary too. Second supplementary. Sir, I'm going for the second supplementary, but as I said, the Poshan Abhiyan has not been a good success. So I was asking if government intends to do something more. Okay. Anyway, no, sir, this is the second part. This is the first part. Okay. Only one part. Sir. So the second part, sir. Now, as per the answer, and as per several news articles, the milk inflation increased to 7.7% in October 2022. I would like to know whether the minister has requested or intends to request the finance ministry to remove the 5% GST on curds, lassi, buttermilk, and 12% GST on condensed milk, butter, ghee, cheese, etc. for easy accessibility for the lower income groups. Thank you, sir. Well, the question doesn't relate to me directly. It's a matter of the finance ministry, along with the finance ministers of all the states. GST Council is not of the central government. It's a council of all states which collectively takes decisions in their collective wisdom. I would like to share with the honorable member that a lot of this emanated from the demand from industry itself to have a small GST component, because a lot of the inputs that were going in for packaging, for transporting, and the entire distribution chain for milk products had GST being paid on them, and they were losing the input credit. So really the consumer prices have not gone up at all because of GST. They have been able to take the benefit of input GST credit and netting it off against the GST impose. So I think that it will be good if the honorable members study the impact of GST in the context of input credit also. Santosh Kumar. As per the annexure attached to this answer, it is evident that in most of the states, these prices have shot up. So I would like to ask the minister, is there any corresponding increase in the income of farmers, producers? Honorable Minister. Chairman, sir, since I've given 3 years data, you will find that the increase over 3 years is not very significant. By and large, prices have been stable. It's only recently, because of global situation and the fact that the demand is increasing significantly, that prices have gone up in a small measure. We are still monitoring the situation to ensure that it's orderly. We are fortunate to have the Cooperation Department and Cooperation Ministry now as a separate ministry, which is supporting the cooperative sector in processing, helping farmers get the major chunk of income coming out of sale of milk, and supporting the farmers in a big way. So Amul, for example, from Gujarat, has been a big success story, which has helped farmers, particularly women farmers, get income out of the sale of milks. So the fact that the milk prices have gone up slightly is actually supplementing the government's effort to support an increase in income and doubling the income of farmers. Ghanshyam Tiwari. मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा। सप्लीमेंट्री हाँ सब यस सर पूछ रहा हूँ कि भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है, पर मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भारत में प्रतिदिन कितना दूध उत्पन्न होता है और कितना दूध बिकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट उसमें होती है, किसानों को इसी से नुकसान है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सही बात है। वास्तव में बधाई के पात्र तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, हमारे एनिमल हस्बेंड्री अफेयर्स मिनिस्टर, और दूध बड़े पैमाने पे भारत में बनता है और वास्तव में विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश बनने का गर्व तो मुझे लगता है पूरे सदन के हर सदस्य को होना चाहिए। इस बात का गर्व, मिलावट कोई जानबूझ के नहीं करता है। मिलावट के बारे में जानकारी जैसे ही कंज्यूमर अफेयर्स में या कोई डिपार्टमेंट में आती है तो मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका कार्रवाई करता होगा। अवश्य उसके ऊपर
पूरी जिम्मेदारी से हमारी व्यवस्थाएं काम करती होंगी, लेकिन अगर माननीय सांसद महोदय को कोई विशेष जानकारी है कि कहां मिलावट हो रही है, कौन कर रहा है, तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। रही बात दूध के उत्पादन की, आज दुनिया में हम सबसे बड़े 23% दूध का उत्पादन करते हैं और 1984 लाख टन यानी लगभग 2000 लाख टन दूध का उत्पादन 2021 में हुआ, जिसका शुल्क वैल्यू 8,32,000 करोड़ रुपए और अधिकांश ये पैसा सीधा किसानों के। राघव चड्डा। सर दूध के दाम जब बढ़ते हैं तो किसान का बजट और देश के आम परिवारों का घर का बजट भी बिगड़ जाता है। राघव चड्डा जी, मैं किसान पुत्र हूं। आप तो हैं ही सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। सर दूध के दाम बढ़ने का एक मुख्य कारण, सर मैं 1 मिनट बस, मैं मंत्री जी का ध्यान भी चाहूंगा सर दूध के दाम बढ़ने का एक मुख्य कारण यह रहा कि फॉडर प्राइसेस इस देश में पिछले 2-3 साल में खास करके बहुत बढ़े हैं। अभी गुजरात का जिक्र हुआ, गुजरात इस देश के दूध के उत्पादन में सबसे आगे है, बिल्कुल सबसे आगे है, लेकिन उस गुजरात में भी पिछले 2 साल में फॉडर प्राइसेस का जो एरिया अंडर क्रॉप था वो 1,36,000 हेक्टेयर से गिर गया। मेरा सवाल यह है कि भारत सरकार को इस बात का अंदाजा था कि फॉडर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने आज से 2 साल पहले एफपीओ नाम का एक प्रपोजल, मेरा सवाल यह सर 100 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 100 एफपीओ सेटअप करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रपोजल मूव किया था आज से 2 साल पहले। 2 साल में एक भी एफपीओ रजिस्टर नहीं हुआ, जो सिर्फ फॉडर प्राइसेस और फॉडर प्रोडक्शन पे ध्यान जिसको देना था, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव यह था। मैं एफपीओ के बारे में पूछना चाहूंगा। तो अच्छी बात कही माननीय सदस्य ने, अगर झूठे अफवाहें और नारेबाजी के बदले वो खुद थोड़े एफपीओ ही बना देते तो देश का बड़ा भला होता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार लगातार फॉडर के ऊपर भी नियंत्रण रखती है। पीछे जब फॉडर की कमी महसूस हुई तो उस पर इंपोर्ट अलाउ कर दिया गया, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की जरूरत पड़ी तो उस पर भी सरकार ने विचार किया। एक सरकार लगातार नियंत्रण रखती है कैसे कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 33 श्रीमती शांता छेत्री। सर माय क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया। हाँ जी। Supplementary one. Sir, my first supplementary question is under Prime Minister Textile Region and Apparel. Will the Honorable Minister through you, sir, answer specifically the fund allotted and project detail for Darjeeling and Kalimpong district? Thank you, sir. Specifically बोला गया। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर सबसे पहले तो आज मुझे मौका मिला है कि अपर हाउस में आपके अध्यक्ष होने के बाद में ये पहली बार है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि यही खंड है जहाँ हम नए मंत्री चाहते थे हमारा अच्छे से इंट्रोडक्शन हो जाए, लेकिन हुआ नहीं था। और आज जो सवाल यहाँ से आया है कि टेक्सटाइल रिलेटेड, उन्होंने जो 2 सवाल किए हैं उनका जवाब दिया है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल के लिए क्या चाहती है और कौन से विषय में चाहती है। तो मैं संरक्षण आपका इसलिए चाहती हूं कि टेक्सटाइल मंत्रालय ने क्या किया है और उनका कंसेप्ट क्या है, क्योंकि उनके दूसरे प्रश्न में, पूरे प्रश्न में भी पूछा गया है कि जो पीएम मित्रा पार्क बनने वाला है इसमें क्या हमारा स्टेटस है। तो टेक्सटाइल रिलेटेड जितनी भी योजना अब तक भारत में बनी, इसमें 2 प्रकार की चीजें हुई कि सिर्फ कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री के बजाय हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, रेशम
जूट और इसके साथ में मैनमेड फाइबर के लिए हम सब ने योजना बनाई। और जब मैनमेड फाइबर के लिए जो योजना बनाई, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हम लोगों ने ये पीएम मित्र स्कीम का इंट्रोडक्शन हुआ, तो एक पैमाने पे इकोसिस्टम से एक ही साथ में ये प्रोडक्शन मैनमेड फाइबर का हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने ये स्कीम तैयार की। और इसमें 13 राज्यों से प्रपोजल आए और 13 में से 7 राज्यों को इसमें पीएम मित्रा पार्क के लिए इसमें सम्मति दी जाएगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये पार्क के लिए भी पश्चिम बंगाल से कोई प्रपोजल नहीं आया। दूसरी बात कि जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट के लिए जो पैसे आज तक दिए गए हैं, इसमें कई सारी स्कीम है। माननीय जो सदस्य का प्रश्न है, ज्यादातर रेशम के लिए है, सिल्क के लिए है कि 4 प्रकार के सिल्क जो प्रोडक्शन होती है, तो यहाँ प्रोडक्शन से लेके जहाँ उनकी कोकून के साथ में उनकी खेती भी हो जाए, फिर उसका ड्रिलिंग हो जाए, इससे अच्छे उसके सेंटर बने, उनको लेटेस्ट मशीनरी मिले, और इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल होनी चाहिए जो आज तक आई नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि हमारे यहाँ सभी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन, जिसका हमें बहुत महत्व होने वाला है G20 समिट में भी। आप भी कहीं जाते हैं तो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीजें लेके जाते हैं, लेकिन आर्टिजन कार्ड ही नहीं बने हैं। वहाँ कितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो केंद्र सरकार की योजना में मांगे गए हैं, वो उन्होंने नहीं बताया। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, my second supplementary question is whether the Textile Ministry on its inspection found Darjeeling or Kalimpong district suitable for setting up of a Prime Minister Mitra Park. If yes, can the proposal still be sent by the state government? And if yes, the last date of submission of the proposal. Thank you. Honorable Mr. वही बताया क्योंकि यहाँ से प्रपोजल आई नहीं है। प्रपोजल आएगी तो वो स्टेट में डेट भी चली गई। 51 ये जो 51% शेयर राज्य सरकार का होता है सेटअप करने के लिए, और बाकी केंद्र सरकार के सहयोग से ये पार्क लगेंगे। और इसमें टेक्सटाइल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, इसका सब भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन वहां से प्रपोजल ही नहीं आई है। थैंक यू। श्री अनिल बोंडे। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 13 राज्यों से जो प्रस्ताव पीएम मित्रा के लिए भेजे गए हैं, उसमें महाराष्ट्र की तरफ से संभाजीनगर, औरंगाबाद तथा अमरावती, नांदगांव, पेट के 2 प्रस्ताव गए हैं। तो ये पीएम मित्र की जो योजना है, ये कब से कार्यान्वित होगी और उसका कार्य प्रभाव और रोजगार निर्मित, किसानों को फायदा महाराष्ट्र में ये 2 प्रस्तावों के बाद में कैसा होगा, उसके बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र से 2 प्रपोजल आई है, एक ग्रीनफील्ड के लिए, एक ब्राउनफील्ड के लिए, और इसके लिए राज्य सरकार से समन्वय करके जो राज्य सरकार लेबर पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, इसके साथ में और इकोसिस्टम से 1000 एकड़ जगह जहां पे हमारी इंस्पेक्शन चल रही है, और जो एजेंसी के माध्यम से ये इको पार्क डेवलप होगा, जिसमें सभी प्रकार की सुविधा साथ में, क्योंकि ये वैल्यू चेन वाला प्रोडक्शन है, तो सब लोग एक साथ में अच्छे से बिजनेस कर पाए, तो ये करके हम लोग उनको मंजूरी देंगे। श्री KRN Rajesh Kumar. Honorable Chairman, sir, Virudhunagar in Tamil Nadu is identified for setting of a PM Mitra Park. Officials from the Ministry of Textiles have already visited the place. Will the Honorable Minister be pleased to state the current status of the PM Mitra Park, Textile Park at Virudhunagar project? Thank you, sir. Honorable Minister. मैंने बताया कि सभी 12 स्टेट से 13 एप्लीकेशंस आई है, और इसके लिए राज्य सरकार से हम लोगों ने कुछ बातें करी है कि जिसमें टेक्सटाइल पॉलिसी होनी चाहिए, लेबर पॉलिसी होनी चाहिए, पावर पॉलिसी होनी चाहिए, जो अच्छे से वो सपोर्ट करेंगे उसी को ये पार्क मिलेगा। श्री इलामारम क्रीम। अलार्म क्या है? इलामारम क्रीम। You can use the other, you can now use both. Yes. Honorable Minister has explained various schemes for capacity building in textile sector. My specific question is, what's your plan to revive National Textile Corporation mills which are laying cost? Question number 34.
श्री जोश के मनी, बहुत बढ़िया। नहीं है मतलब दर्शना में Honorable Minister. A statement is laid on the table of the House. Supplementary one. Yeah, right. Sir, Kerala has gone through 2 consecutive floods in 2018 and 19. We not only lost the lives of hundreds of people, but also their lives and their livestock and agriculture. During 2018 disaster floods, the center has allotted 89,540 metric tons of rice to distribute through PDS as flood relief. It is learned that the center has demanded to pay 205 crores for the food grains supplied during the emergency. Pointed question. Sir, my question is how this demand can be justified by the center as the food grains were distributed among poor people and casualties during the the worst natural disaster of our Kerala. Okay, Honorable Minister. This subject does not relate to our ministry because every state is given support by the center for any such natural disasters that may occur. Funds are given by the center to all the states of India, and they are expected to meet such requirements of any natural disaster out of those funds. Odisha has had so many cyclones, Gujarat has had cyclones and typhoons, Maharashtra has had them, Andhra Pradesh has had them, West Bengal has had them. Every state, through their SDRF and NDRF, meets the requirements of such a nature. I think Kerala should not be an exception, and they have received the funds from the center. Kindly utilize those funds to give relief to your people. Second supplementary. Actually, it is during the emergency time. Anyway, the second supplementary is in 2022, India has been ranked 107 in the global hunger index out of the 121. The neighboring countries like Nepal, Pakistan, Sri Lanka, all in front of us, and Afghanistan, only countries behind us. So, though the government has continuously questioned the methodology used to bring these index, the prevalence of hunger and poverty in the country is well seen. My question is, has the government found out the reason behind this mismatch between the excess stock of food grains and the prevalence of hunger in the country? Does the government have any plans to address the critical issue which affects the millions of poor people? Honorable Minister. The proposition he has made that food grains were supplied to Kerala and therefore it should not be charged is wrong. NDRF, SDRF is required to pay for the food grains or any other supplies that you may take from anybody else. The food grains were given to Kerala on the premise that they will pay for it. Now they are changing their mind. It's an abject failure of the state government to meet the needs of their people, which has been exposed by my colleague, Mr. Mani. As regards the hunger index, first of all, the name itself is a misnomer. The fact is that every state of India, sir, Honorable Chairman, sir, every single state of India has given it to us in writing that thanks to the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, where we supplemented 5 kilos of additional grain over and above National Food Security Act entitlement, we have in a way eliminated hunger or starvation from this country. Every state has written that not a single death due to starvation occurred over the last 2 years. We have it in writing, including from your state of Kerala. Yes, sir. This hunger index is a private index made by some private NGO based on subjects which are not related to hunger. Okay. So they have to first decide what the nomenclature should be. The statistics are drawn out of data which is unverified, and also on measures or measurements which don't relate to India. For example, the wasting, stunting figures that take up are just completely not related to Indian features of an Indian person. So I think it's important that we recognize what is official and validated and what is mere propaganda. Honorable Minister, I'm slightly making a point. In our country, iconic status is granted on parameters that are often baffling.
and we have calibration by agencies that do not have any rationale. This august house is repository of the wisdom of 1.3 over billion people. We therefore, when we raise an issue in this house, that there is a calibration by an agency that should not carry much conviction unless the honorable member or the honorable minister is premised on our own record. Let us believe in our own worth. It will be very difficult and inappropriate for us to surrender our assessment, our achievements, to be assessed by those who have either inadequate data or are dictating their actions by their interests, not ours. Shri Sanjay Singh, Shri Sanjay Singh, Shri Sanjay Singh, Shri Sanjay Singh. I think I would, one thing before, I think every time I say something and drop off a hat, we get adversarial stance. Try to digest what I have said, sir. We must analyze the calibration. We will have respect for... One second, please take your seat. Take your seat. Dr. Jairam Ramesh, take your seat. What I have said is rational with a rationale. And that rationale is, we should not be captive. We are a part of global unity. One second, sir. Sir, don't interrupt the chairman. Please, I have understood it. So I would, one second. I would urge everyone that there are some issues which we need to reflect overnight. I would have individual interaction with all of you. I am very categorical. Our country cannot be allowed to be hurt by calibration from outside on premise which we do not believe in. That does not mean the calibration outside has no credibility. We will have to get into those areas. I'll come to the question now, Shri Sanjay Singh. Confined to the question. धन्यवाद मान्यवर। सबसे पहले तो मैं आपको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। पहली बार आपके समक्ष बोलने का अवसर मुझे मिला है और आपने इस विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भारत की राशन वितरण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए, ये हम सारे लोग इस बात पे सहमत होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारी राजनीतिक मतभिन्नता हो सकती है मान्यवर, लेकिन राशन वितरण प्रणाली में राशन के दुकानदार कितनी गड़बड़ी करते हैं, इस सदन का हर नेता इस बात को जानता है। मैं इसी पे आ रहा हूं सर। पूछिए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई, जिससे कि राशन वितरण, देखिए हंस रहे गरीब आदमी, गरीब पे हंसते हैं ऐसे सर। ये सब जानते हैं कि राशन वितरण प्रणाली में धांधली होती है। मान्यवर, घर घर राशन पहुंचाने की योजना को आप मंजूरी क्यों नहीं देना चाहते, इसको आज सदन में स्पष्ट कीजिए। गुड क्वेश्चन। योजना को आप मंजूरी नहीं देते, राशन पे आप मंजूरी नहीं देते, आप चाहते क्या है? गरीब को राशन क्यों नहीं देना चाहते? महोदय, मैं भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि देश में मुझे बड़ी खुशी है कि आप दोनों विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी विनम्रता से आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि देश में एक कानून है, कानून व्यवस्था से देश चलता है और कानून ने
प्रावधान ऐसे बनाए जिससे कोई भी राज्य सरकार अगर धांधलेबाजी करना चाहे तो उसको रोका जा सके, और यही दिल्ली की स्कीम कोर्ट द्वारा नामंजूर करी गई है। सरकार, एक मिनट सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से, क्योंकि इनको गलत फहमियां ठीक करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया है कि फ्री फेयर प्राइस शॉप भी राज्य सरकार के अंतर्गत चलती है। एक्शन क्यों नहीं लेते अगर वो गलत काम कर रहे हैं? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसमें एक्शन ले। और ये घर के नाम पे चोरी करना चाहते हैं। दिल्ली की सरकार हर चीज में चोरी करके धांधलेबाजी से गरीब का अनाज चोरी करने का एक नया प्रयोग, पहले दारू में चोरी, अब अनाज में चोरी। ये चोरी की सरकार चोरी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहती है। मंत्री जी बैठिए, सुभाष चंद्र। I have a point of order. I have a point of order, sir. This is in relation to Rule 47, Sub-Rule 2. Rule 47, Sub-Rule 2 says, the right to ask a question is governed by the following conditions. And there are 22 conditions. For the person who will raise the question, for the honorable member who will raise the question. But there is no such conditionality insofar the ministers are concerned while giving the reply. Just now, I have found this House has witnessed that in reply to a supplementary question of Honorable Member Mr. Sanjay Singh, the Honorable Minister characterized the state government as a chore, thief government. Whether this is admissible under the rules, I put it for your kind consideration. There are two things I need to indicate. One, there is no point of order during this tenure, this period. Am I right? Yeah. But you have allowed. Question hour. Sir, you have allowed. One. With your consent, I have raised the point of order. There is no question of point of order in question hour. Number two, the honorable member has raised an issue which we all must consider. I'll look into it. Yes. I am so. Thank you, sir. Sir, my Subhash Chandra Pilli, please. Yes. Not mine. Thank you, sir. I was appreciating your patience, but the patience continued beyond a limit. Go ahead. I am putting my straight question, sir. Can the Honorable Minister state the reasons why the targeted public distribution system in Andhra Pradesh covers only 61% of rural and 41% of urban population when compared to the stipulated coverage of 75% rural and 50% of urban population under National Food Security Act? I also request the Honorable Minister to revise the coverage of beneficiaries by TDPS and NFSA as recommended by Niti Aayog. Honorable Minister. This is unfortunately a legacy of the very ill-drafted AP Reorganization Act, in which a lot of questions were left unanswered. It was done in a hurry, because of which, when the allocation of free food grain between Telangana and Andhra Pradesh was decided, it was probably not very scientific, and Andhra Pradesh feels that they have been unjustly deprived of the right amount of coverage. Telangana was given a greater share compared to Andhra Pradesh. It was done before this government came in. It was based on the census of 2011. And ideally, when the census of 2021 happened, we would have been able to look into the matter afresh. Unfortunately, due to the COVID pandemic,
We have not yet been able to conduct the census. I'm sure, and I have assured the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh during several conversations that when the census data, current census data comes out, we will know exactly which state should get what quantity. I received it as a legacy. Was probably done in a hurry, but sadly it's beyond my power under the NFSA to change it. Thank you, sir. Shri, Based on 2000 census. If only you can conduct the census, Shri this problem will Jawar not have Sarkar. arisen. You are repeatedly postponing. Shri Jawar Sarkar. Sir, for this opportunity. I have only one simple and sharp question addressed to the Honourable Minister. Are we heading for a food crisis? I have figures with me. We have stocks, usually stocks of about 25 million to 26 million tons of wheat at the beginning of the year. We have around 29 to 30 million tons of rice at the end of the year. And last year's procurement was an all-time record, last year's procurement. But in this current year and in the previous year, we have consumed a lot thanks to the Prime Minister's Yojana scheme, the free food scheme. The net question is that both wheat has been impacted, sir. As you know, wheat has been impacted by the heat wave and other factors. And, sir, rice, paddy has also been badly impacted. Honorable they have Minister, been the question has been asked. reflected on the procurement figures. Honorable So we Minister. are in a shortage state. We are in a shortage state, Honorable Minister, Honorable and Minister, I would like government question is very to clear. admit it and take steps. Honorable Chairman, sir, that question is in two parts. I'll give a sharp and short reply for the first part. Sir, give short, polite, and Very modest. polite, sir. Sharp may be avoided. Have you seen me ever lose my temper in any of the question answers, sir? No, I know Jawar Sarkar ji, he will not take a sharp reply. He will take a modest reply. Okay, so I'll, with all due modesty, sir, share with the honorable members through you, sir, that the country, thanks to the very deft management of the economy by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, will not face any food shortage in the years to come. Yes. I can assure the honorable member, we are carefully calibrating and managing our stocks of buffer stocks, of rice, wheat, of different other products where we have buffer stocks on pulses. We are very deftly managing and calibrating import duties, export duties to ensure that our stocks remain intact. And while the world may face a food deficit, fortunately, because we are monitoring it on a daily basis, with the Honorable Home Minister, Mr. Amit Shah, heading a group of ministers continuously monitoring inflation and stock levels and other associated fiscal and monetary measures, we have been able to control scarcity as well as control inflation. As regards this other point on buffer stocks, our buffer stocks are within norms despite, as I said earlier, doubling the food allocation. Nearly 1,100 lakh metric ton of rice and wheat has been distributed free of charge to 80 crore people. It's a humongous quantity. Thanks to the record procurement, we were able to feed every single person, and as I said earlier, zero starvation deaths. Yes, And I'm sure you'll appreciate that Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, particularly in the stress of COVID, was one of the most important schemes that saved the country. Honorable Vice President and Chairman, sir, you yourself have received accolades in your international visits about this scheme, sir. Question number 35, Shri Ajit Kumar Bhuyan. Question number 35. Honorable Minister. Statement is laid on the table, sir. Supplementary one. From Honorable Minister's reply, I came to know that there was an inquiry or investigation on the aspect of irregularities in the construction work. But now
I would like to know that if there is no construction defects, then how the part of the Lamjung-Silchar portion of track, which is the only connectivity of Barak Valley of Assam and to the states of Tripura, Manipur and Mizoram, is washed away during the rainy seasons everywhere, leading to untold misery to the people of these areas. Honorable Minister. And another point, and the same question, that Northeast Frontier Railway... Let the Honorable Minister respond. No, sir, this is the same question, sir. Part of the same question. You get one more supplement. You get one more supplement, Honorable Minister. सर, पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके डीप विजडम और लॉ की जो बहुत वास्ट नॉलेज है और पब्लिक सर्विस में आपका जो लंबा अनुभव है, उससे इस हाउस को बहुत फायदा होगा सर, बहुत बेनिफिट होगा और नए हाइट पे पहुंचेगा यहाँ पे डिबेट सर। मैं क्वेश्चन के आंसर पे आता हूँ। लमडिंग सिल्चर गेज कन्वर्जन का जो काम हुआ था सर 1996 में सैंक्शन हुआ था, 2010 से 2015 के बीच में इस पे काम हुआ था। माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या इसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी में अगर कुछ नहीं मिला तो वॉश आउट क्यों हुआ, ये आपका प्रश्न है। इसमें इंक्वायरी हुई थी सर, सीवीसी के एक पूरा पैनल बनाया गया था, उस पैनल ने जाके इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी में कुछ भी नहीं मिला था और इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट अगर आ जाता किसी के जानकारी में हो तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जो मई में बहुत जबरदस्त एक साथ क्लाउड बर्स्ट जैसी बारिश हुई, उसके कारण नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगह रेलवे लाइन, हाईवे, प्राइवेट हाउसेस, फार्म लैंड्स सबको डैमेज हुआ था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानने की सर कि मई में डैमेज हुआ विद इन अ पीरियड ऑफ some 38 to 40 days, entire network was restored in a record time with very good efforts by the entire team, including the state government and the central government together. Sir. Second supplementary. Now, I would like to know that is there any lapses, are there any lapses in planning or execution? And at the same time, whether any inquiry has been conducted to ascertain the cause of massive damage in the section in the recent flood, and how much amount had to expended to put the railway traffic. Honorable Minister. मई के महीने में जो बारिश आई थी, it was almost like a cloud burst. और केवल इस सेक्शन की बात नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में विशेषकर जो आसाम और मणिपुर के कुछ एरियाज हैं, उसमें बहुत वास्ट डैमेज हुआ था, बहुत बड़े फ्लड्स थे। इसके लिए जो राज्य सरकारों ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके जो काम किया, उसको सबसे पहले अभिनंदनीय है सर वो काम। इतनी बड़ी मैसिव फ्लड में भी एक बहुत ही मेथोडिकल तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक प्रॉम्प्ट रिस्पांस से काम हुआ है। रिस्टोरेशन वर्क पे फोकस किया गया। और जो माननीय सांसद पूछ रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आई, सर कोई भी नई रेलवे लाइन जब भी बनती है उसको स्टेबलाइज होने में करीब 10 से 12 साल लगते हैं सर। मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी हैं, तो एक तरह से मैं ये कहूं कि ये न थी हमारी किस्मत की विशाल यार, तो आज विशाल यार भी हुआ। मैं चूंकि प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि रेलवे का मामला है। मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं, हजारों की संख्या में जिनके रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस हो गई थी टेक्नीशियंस की, उनमें से अभी भी स्टैंड बाय और वेटिंग क्लियर होना बाकी है। क्योंकि रेलवे हमारे लिए सिर्फ व्यावसायिक उद्यम नहीं है, रेलवे के पीछे सामाजिक सरोकार है। इस पर ध्यान दें माननीय मंत्री महोदय। टोटली अनरिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं मान्य सांसद जी की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, आज रेलवे करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कर रही है। आज आप जानिए एनटीपीसी कैटेगरीज हो, ग्रुप डी की कैटेगरी हो, कितना ट्रांसपेरेंटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है। कहीं पर भी पूरी तरह से चौकन्ने हम लोग की बाई चांस कोई दलाल बीच में आके प्रॉब्लम भी करना चाहे, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है।
और जो पुराने वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे उसमें करीब करीब 70% कैंडिडेट्स को ऑलरेडी दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, सुशील कुमार गुप्ता। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभा पटल पर रख दिया गया। सप्लीमेंट्री 1। फर्स्ट सप्लीमेंट्री सर, माननीय मंत्री जी ने जैसा अपने आंसर के अंदर बताया 2022 में सप्लीमेंट्री चावल के भाव जनवरी से लेकर नवंबर तक 4 रुपए किलो बढ़ गए। 60% हिंदुस्तान चावल खाता है। पानी की कमी के कारण कुछ राज्यों में चावल की जगह दूसरी खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरा सवाल है, क्या केंद्र सरकार किसानों को अधिक चावल उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और कैसे करेगी, और पानी वाले राज्यों के अंदर विशेषकर? माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूँगा कि चावल की खेती निश्चित रूप से देश के अंदर जो हो रही है उसमें लगभग 31 करोड़ टन है जो पूरा उत्पादन होता है, उसमें से 13 करोड़ टन है वो चावल का उत्पादन होता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भाव की बात है, तो निश्चित रूप से समय समय पर भाव का उतार चढ़ाव होता है और ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं हुआ है। पहले जितना देखा जाए तो बहुत कम उतार चढ़ाव हुआ है और इसको लेकर सरकार निश्चित रूप से हमेशा सरकार भाव कंट्रोल करने का भी ध्यान रखती है और साथ ही कंज्यूमर का भी ध्यान रखती है और किसान को भी सही दाम मिले, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर सरकार काम करती है। और इसको बढ़ावा देने के लिए और सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैंने सेकंड सप्लीमेंट्री, रिटेल बाजार में 6 रुपए किलो बढ़ गया, आप कह रहे भी कम बढ़ा और बढ़ेगा। आम व्यक्ति का क्या हालात हो रही है देश के अंदर, ये जानने की बात है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसान भी इस परेशानी से जूझ रहा है। किसान की आय बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए, अच्छे चावल की निर्यात की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्रों पे इस 5 वर्ष में कितने अनुसंधान किए गए चावल की उन्नत किस्म को बढ़ाने के लिए? ऑनरेबल मिनिस्टर। बताते हुए खुशी है कि आईसीआर के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कई वैरायटियां हैं जो चावल की इजाद की गई है और एक्सपोर्ट की दृष्टि से भी कई नई वैरायटियां इजाद की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूसा बासमती के तौर पर भी नई वैरायटियां आई है। इसके अंदर जैसा कि एक हमारी जो वैरायटी है जिसमें RI 64 है और एक RI स्वर्णा भी है और इस तरह से टोटल वैरायटियां हैं वो 8 नई वैरायटियां अभी पिछले 1-2 साल के अंदर नई वैरायटी आई है, जिससे कि वो विदेश के अंदर जाती है। तो कुल मिला के कुछ यूरोपियन कंट्री के अंदर एक विषय आया था जिसमें हमारे जो किसान पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, ट्राइक्लोजोल जो उपयोग करते हैं, उसकी वजह से उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन अब उसी की ध्यान में रखते हुए ये जो नई वैरायटियां तैयार की है जिसके अंदर जिंक है, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, तो ऐसी वैरायटियां तैयार की है जिसकी वजह से आज उत्पाद जो एक्सपोर्ट है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल जस्ट जो 2021-22 में जो एक्सपोर्ट चावल हुआ था वह 1.7 करोड़ टन था, जो इस साल बढ़कर 2.12 करोड़ टन हो गया है। हाउस स्टैंड्स adjourned till 2:30 PM.
नुकसान का केंद्रीय टीम से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिससे अति पिछड़े जनपदों के किसानों, गरीब मजदूरों को बाढ़ से इस आपदा से राहत मिल सके। धन्यवाद। सर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का और आपका एक अत्यंत ही गंभीर विषय के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सर, आजकल पूरे बिहार में, पटना सहित जो राजधानी है उसके सहित पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर युवा शक्ति जो है सर, नौजवान जो हैं, सूखे नशे के आदी हो गए, जिसके वजह से पूरे बिहार में नौजवानों का जो एक बड़ा तबका है वो बर्बाद हो रहा है। सर, वहाँ सूखा नशा में सर गांजा, ड्रग्स, नशीली इंजेक्शन, सॉल्यूशन, व्हाइटनर इत्यादि पूरे गिरफ्त में आ गई है। सर, वहाँ पर बिहार सरकार ने नशाबंदी लागू कर रखा है। सर, मगर उनके गलत नीतियों की वजह से नशाबंदी पूरे तौर पर बिहार में लागू नहीं है जी। और उसके अलावे नशाबंदी तो है और बड़े पैमाने पर शराब और नशा की चीज आ रही है। सर जी, आर्थिक लॉस तो हो ही रहा है। बस सबसे चिंता का विषय है कि नशाबंदी आपने किया, सफलता हासिल नहीं कर पाए, जमीन पर नहीं उतार पाए, और युवा जो है पूरी शक्ति चेंज हो गई है। घर का घर बर्बाद हो रहा है, नौजवान की जिंदगी जा रही है। सर, परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, मां और बहन की। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मौलाना आजाद नेशनल fellowship was an important scholarship scheme for research scholars from Muslim, Christian, Sikh, Jain, Buddhist and Parsi communities. Yesterday I was answered in Lok Sabha by the Ministry of Minority Affairs with a statement that government has decided to stop Maulana Azad National Fellowship. It is really shocking, and it will affect many aspiring research scholars from various minority communities. Honorable Ministry says that the Maulana Azad National Fellowship is overlapping with other scholarship. If there is such overlapping issues, the government shall systematically solve that issue. Cancelling the entire scheme is not a wise idea. If there is no Maulana Azad Fellowship, the students from minority sections who are not coming under other reservation criteria like OBC, SC and ST will be pushed away from all fellowship schemes. The decision to discontinue a fellowship named after Maulana Azad, who is India's first education minister, is an insult of his legacy. I kindly request Honorable Minister of Minority Affairs to withdraw the decision to stop Maulana Azad National Fellowship immediately. दोपहर 2:05 तक के लिए स्थगित की जाती है।
राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर जीबी मावलंकर ने न सिर्फ संसद भवन में नियम और प्रक्रियाओं को पेश किया, बल्कि कई संशोधन भी वो लेकर के आए थे। सदन में प्रश्नकाल को नियमित जीबी मावलंकर ने किया, जिसके बाद जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही और बढ़ गई। काफी कड़ाई के साथ वो संसद भवन में मान मर्यादा का पालन करते थे और सांसदों से भी करवाते थे। सांसदों को शपथ दिलवाने की शुरुआत जीबी मावलंकर ने की थी। एक बार उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम लेने में मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो आप मुझे माफ कर। स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के लिए मर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। वर्ष 1932 में अपनी झोपड़ी के बाहर से निकलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का शंखनाद से स्वागत करने वाली मातंगिनी 62 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में इसकी कमान मातंगिनी हाजरा ने संभाली। मातंगिनी ने तामलुक में एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया और 29 सितंबर को 6000 लोगों के जुलूस के साथ मातंगिनी हाजरा तामलुक थाने की ओर चल पड़ी। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, लेकिन मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बढ़ने लगी। अचानक एक गोली मातंगिनी के दाएं हाथ पर आ लगी। घायल मातंगिनी दूसरे हाथ में तिरंगा लिए फिर आगे बढ़ने लगी। गोलियां चलनी बंद नहीं हुई और लगातार तीसरी गोली 72 वर्ष की मातंगिनी हाजरा के माथे पर जा लगी। आखिरी सांस तक हाथ में तिरंगा और जुबान पर वंदे मातरम। यही थी मातंगिनी हाजरा। अद्भुत साहस, उत्साह और आजादी पाने के ललक से युवाओं को भी पीछे छोड़ने वाली मातंगिनी हाजरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. श्री तेजस्वी सूर्य. तेजस्वी सूर्य ಎಂಬ ಹೆಸರು. Second youngest MP in the 17th Lok Sabha, elected at the age of 28. From effectively raising issues of regional and national importance in Parliament to firmly advocating India's data sovereignty by being member of the Parliamentary Standing Committee on Information Technology. The country has witnessed an economic miracle in the last 7 years. Tejasvi Surya has utilized every opportunity, focusing on legislative, deliberative and developmental roles. Economic reforms introduced in the last 4 budgets that she has presented is very dedicatedly, concertedly a result of the conviction of the government to introduce economic reforms. He has raised voice in the matters of national and public importance in 24 debates of Parliament, ranging from safe evacuation of Indian citizens from Afghanistan and safety of NRIs and PIOs on national issues like CAA, terrorism, cybercrimes and environmental preservation. Under the leadership of the great Prime Minister Narendra Modi, has radically transformed the country's electorate, the country's polity, in such a manner that our country's
democracy is only becoming strengthened every single day. He has raised 267 questions on the floor of the House. Apart from his participation in debates, Tejasvi Surya has also made several zero-hour interventions on local language in IBPS exam for regional rural banks, security of monuments of national importance, law and order situation in Kerala and implementation of NRC in Karnataka. For the posts of officer scale 1 and office assistant multi-purpose for regional rural banks, it was mandatory that the candidates who apply for the examination must profess proficiency in the local language. Surya also moved a private member's bill before Parliament seeking to repeal the Information Technology Intermediary Guidelines Rules 2011 as it dissuades big tech companies to censor free speech without constitutional oversight. He has raised a wide gamut of issues related to his constituency, like shortage of nurses and nursing colleges in Karnataka, efficiency of airports in Karnataka, suburban rail project in Bengaluru, proposal for national highways in Karnataka, minimum wages for gig workers, Swadesh Darshan project for Karnataka, herbal gardens in Bengaluru, NHI projects in Karnataka, and also ease in registration of startups. Namaskar, hello and a very warm welcome viewers. You're watching the special presentation of Sansad TV, your MP. And today we are in Bangalore South constituency, which is the parliamentary constituency of BJP's Tejasvi Surya. In this edition, we'll see how his vision of development has translated into action on ground. So come along. As an elected representative from Bengaluru, he envisions the city to be one of the biggest economic powerhouses in the country with the help of a young team. So Tejasvi ji, I remember I had covered 2019 Lok Sabha elections in Karnataka, South Bengaluru. I remember that fanfare when there was this greenhorn taking over Congress's long-term veteran. You won. Of course, this is a high-profile seat for the BJP. 2019 to 2022. How have you transformed your constituency? Well, it has been a great learning experience for me. Before I say how I have transformed the constituency, I would want to spend 30 seconds saying how there has been a transformation personally for me. I have grown more patient, more mature. I feel more responsible for the people of my constituency who have reposed so much faith in me. I have grown to trust the possibility of the system to deliver more.